Assalamu alaikum. I am Dr. Khan Rumana from Department of Zoology, J.A.T Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Dear students, I heartily welcome you in my video lecture. Today my topic is from FYBSc Zoology Practical, and we will be study about general characteristics of planaria. Now first we see the classification of planaria. Planaria belongs to the phylum Platyhelminth because planaria is also triploblastic animals having 3 layers. इसके अलावा जो प्लेनेरिया जो होते हैं सिलोमेट और इनकी बॉडी का जो शेप होता है दे आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल. ये सारे कैरेक्टर होने की बिना पर प्लेनेरिया बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ. इट्स क्लास इज टोबिलेरिया. प्लेनेरिया इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इस क्लास टोबिलेरिया में जो है वो नॉन पैरासाइटिक प्लेटीहेल्मिन्थ पाए जाते हैं और प्लेनेरिया इज ऑल्सो free living organisms. Its order is Triclinidae because intestine with many diverticula. Its family is Planaridae, and in this family all the freshwater planarians are kept. Its genus is Planaria. Now we see its general characteristics. Planaria is commonly called as a Dagesia. It is a freshwater form and it is cosmopolitan in their distribution. Its body is elongated, flattened and somewhat conical. फिगर में आप देख सकते हो इसकी जो बॉडी का शेप जो होता है ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड और इंटीरियर पार्ट या हेड रीजन जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है. एंड बॉडी शेप इज इट इज़ बायलैटरल सिमेट्रिकल. The color of the body is dull grey or brown to black. A distinct head is present which is triangular in shape and bears a pair of semicircular ocelli and a pair of distinct auricles. तो हेड रीजन में आप देख सकते हो यहाँ पर जो वो ऑरिकल्स और ओसिलाई जो पाए जाते हैं. These animals are asilomate, bilaterally symmetrical and triploblastic animals. Body wall is comprised of ciliated epidermis. अगर इसकी हम body wall की स्टडी करते हैं तो we see that body wall consists of epidermis which is ciliated and has rod-like bodies which is called as a rhabditites which is embedded in it. Excretory organs are protonephridia and phlegm cells. With the help of the protonephridia and phlegm cells, excretion takes place. Digestive system is well developed. It consists of mouth, proboscis, pharynx and branched intestine. Pharynx is प्लीकेट एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड्स. फेरिंग्स जो होती है पीछे की तरफ जो वो मुड़ी हुई होती है. जिनाइटल पोर्ट्स सिचुएटेड ए लिटिल पोस्टेरियर टू द माउथ. जिनाइटल पोर्ट्स जो होते हैं वो माउथ के नीचे पाए जाते हैं. प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल. Planaria shows great power of regeneration. If any part of the body cut, immediate lost part are developed in the body of the planaria. And if body of the planaria is cut into 2 parts, अगर उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं तो हर हिस्से से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. और अगर बॉडी के 3 या 4 टुकड़े हो जाते हैं तो each and every part develop into the new organism. Hence we can say that planaria exhibit great capacity of regeneration. Thank you. This is about the general characteristics of planaria
which belongs to the phylum Platyhelminth.